that unfair eviction and people saying the same about me. Farhana is making noise. मलयालम बिग बॉस किया है, what was your experience? Reality shows, you make noise. It was a very challenging experience doing Big Boss South. Doing nothing and then you end up fighting. झगड़ा करने का मन ही नहीं किया. Hi, this is Giselle Thakral and you're watching me on PNTV. हेलो एवरीवन, यू वाचिंग PNTV और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द मोस्ट ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस एंड वेरी 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 टैलेंटेड जिजेल ठाकराल. हाय, आप कैसे हो? यू आर सो वेलकम. Thank you so much for the wonderful introduction. Really thankful. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो बताओ आप कैसे हो? रिसेंटली आपने मलयालम बिग बॉस किया है, what was your experience? Recently, when you come out of Big Boss house after spending so many months, I was there for like 63, 65 days. And so first of all, you come out, आप बहुत exhaust हो जाते हो psychologically, physically. तो थोड़ा सा आपको like rest चाहिए होता है, but then again I had to go for the finale. So yeah, finale करके मैं वापस आ गई हूँ. अभी I think rest करने का time नहीं मिला, but it was a great experience. Yeah. कैसा लग रहा है आपको खुली हवा में सांस लेके? इतने दिन से आप बिग बॉस के घर में थे. या पता है आपको कि वो घर जो होता है वो इतना सेक्लूडेड होता है कि आप किसी और ही दुनिया में रह रहे होते हो, तो आप एक तरह से सब कुछ भूल जाते हो. आपको ऐसे लगता है आप कहीं और हो, किसी और कंट्री में हो, एंड देन आप बाहर आते हो तो आपको लगता है हाँ, बैक to reality. But for me it was a very challenging experience doing Big Boss South. So Giselle, you have done Big Boss Hindi also, season 9 I have seen you. So it was like आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी एंड आई थिंक इट वॉज 3 weeks, है ना? 3 weeks, हाँ. सो लाइक बहुत एंटरटेन किया आपने एंड आपकी फैन फॉलोइंग भी लाइक बहुत सबके बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था आपका. सो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस? कैसा था वाइल्ड कार्ड हो के घर में जाना एंड देन इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलना? वाज दैट? So when I came out, I still remember मेरे 800K 900K followers उस टाइम पे बढ़ गए थे, and that was like, I was like wow. And just in that short period being a wild card, but I think even then the kind of love and the fame that time, yeah, love itna nahi tha. It was more because I was very aggressive. I did had fights, so positive negative, yes, but I did come under that limelight, you can say, and I did enjoy it that time as well. बहुत सारे events मिले थे उसके बाद में, and till now people associate my name with Big Boss. So yeah. So कितना डिफिकल्ट था आपके लिए बिग बॉस के घर में जाना एंड नए लोगों से इंटरेक्ट करना एंड देन सेटल होना बिग बॉस के घर में? कितना डिफिकल्ट था आपके लिए वो? See, हिंदी में तो it was not difficult for me. एक तो मैं बहुत ही I was like full of energy that time. I was like ये करूँगी वो करूँगी. I was full of. Did, huh? I did. I was made for reality shows back in the day. अभी भी ठीक है, but now I'm like I'm more like क्या झगड़ा करना, छोड़ दो. You should go for खतरों के खिलाड़ी. Yeah, खतरों के खिलाड़ी I can do, because उसमें it's not just about talking and getting aggressive. Big Boss में you're sitting doing nothing and then you end up fighting. वो नहीं है. खतरों के खिलाड़ी में it's all about task and doing physical activities, which is very different concept, which I would love to do. But Big Boss Malayalam में the challenge was that Malayalam is not my first language. So एक तो language issue इतना होता था कि lot of times जब बोलना होता था वो आगे वाले को मेरी बात रखने में मुझे problem हो जाती थी. And but I managed, and I think I was just over there. I was nice to everyone. मुझे बहुत झगड़ा करने का मन ही नहीं किया. I don't know. Everybody was sweet. Bonding with Aryan or what? So how was that? So yeah, I think Aryan, because I am half North Indian and half South Indian. My dad's a Punjabi. I have to ask about that. Huh? Yeah, and Aryan is also same. Like he's born and brought up in Kerala, but he's a North Indian Punjabi. So somewhere I bonded with him instantly. तो वो होता है ना, your person, like you enter a house and then you make friends and then you make special bonds. So he was like that, my person. So we used to eat same khana, ऐसा नहीं कि same kind of food, the same way we were eating, and then we spoke a lot in Hindi and English, which was not a right thing to do, because we used to be always called out from Big Boss saying that ये Hindi reality show नहीं है. But yeah, that's how we bonded, and then we were supporting each other and taking care of each other. So it was like that. Okay. So बिग बॉस में आप थी सीजन 9 में हिंदी एंड अभी चल भी रहा है बिग बॉस. सो बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो?
एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं बिग बॉस के घर के अंदर खुद थी इस साल, मैंने इतना बिग बॉस हिंदी नहीं फॉलो किया, मैं देखने का टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं आई एंड उसके बाद में मुझे दोबारा फिनाले के लिए जाना था. सो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, बट ऑन इंस्टाग्राम यू कीप सीइंग ऑल द अपडेट. Yeah. And Kunika ji, because she is a friend of a friend, I knew that she's going, and I keep seeing a lot of other people, Farhana, and Bashir. He got evicted when I got evicted, and I remember that वो At the पूरा same एक time. न्यूज़ हुआ था, that unfair eviction and people saying the same about me. I keep seeing that. तो मुझे लगता है इस साल का बहुत इंटरेस्टिंग है बिग बॉस. आई हैव टू वॉच. पर क्या होता है ना, आप जब बाहर निकलते हो तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आप सेटल Correct. होके देन यू कैन वॉच. सो मे बी आफ्टर फ्यू डेज आई कैन वॉच आराम से फ्रॉम डे वन. ओके. सो सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे होगे बिग बॉस के क्लिप्स. अभी फैमिली वीक चल रहा है. सो घर में फरहाना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है. फरहाना और तानिया की बातें तो सुनी होगी आपने. लाइक वो बिग बॉस के घर में 800 साड़ीज लेके गई है. 800 से 800 साड़ी. पर इतने तो सूटकेस ही नहीं देते. 2 सूटकेस, एक बड़ा सूटकेस मिलता है, एक छोटा. No, 800 साड़ीज amazing. कहाँ लिया? Really? Okay, that is She little said that. unbelievable. हाँ, Really? सच पर आप लोगों ने देखा 800 साड़ीज? नो ऐसा देखा नहीं है बट शी सेज. बट 800 साड़ीज अलाउड ही नहीं है ना. सो बिग बॉस के घर में यो, अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग के बिग बॉस, आई डोंट नो इफ दिस टाइम दे यू गेट 2 सूटकेस, वन बिग वन स्मॉल. उसमें कितने साड़ीज आ जाएंगे? आई थिंक नॉट इवन, मे बी ज्यादा से ज्यादा अगर शिफॉन की साड़ी होगी भी तो 300 से ज्यादा नहीं आएंगे. बट 800? वो एक दिन में 3 कॉस्ट्यूम भी चेंज करती है ऐसा उन्होंने कहा है. ओके, then मुझे देखना पड़ेगा. आई एम गेटिंग टू एक्साइटेड. वाओ, That's great. I should watch them. हाँ, you should. फरहाना का गेम आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज फरहाना बहुत ज़्यादा हो रहा है. आपको मतलब जितना भी आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, सो ऐसा नहीं लग रहा है कि फरहाना मतलब इन्वॉल्व हो रही है या सब इंटेंशनली कर रही है या सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है? व्हाट डू यू थिंक? सी, 2 चीज़ें हो सकती है. फरहाना इज मेकिंग नॉइस. समबडी लाइक मी जो टीवी पे नहीं देख रहा है, फिर भी इंस्टाग्राम पे अगर फरहाना दिख रही है, एंड आई नो हर नेम बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग गुड. सो गुड बैड कुछ नहीं होता है. यो इन रियलिटी शोज यू मेक नॉइस. सो शी इज मेकिंग नॉइस इन अ गुड वे. एंड बहुत सारी उसके क्लिप्स दिख भी रहे, तो मे बी हर PR गेम इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो आई कीप सीइंग हर ऑन इंस्टाग्राम इन लाइक ऑल द गुड पोर्टल्स. सो ऑब्वियसली आई थिंक शी इज डूइंग गुड गेम. और अच्छी बात है, यू नो, लाइक इवेंचुअली अगर आप टॉप 5 में आओगे, या even if you win the cup, only a person who's making that kind of content, if you're giving that kind of content, तभी आप जीतोगे, नहीं तो आप नहीं जीतोगे. So she's doing well for herself. ओके. गौरव खन्ना को आप जानती हैं. सो उनका गेम कैसा लग रहा है? जैसा हमने उनको टीवी पर देखा है, वो सेम वैसे रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं या नहीं? So Gaurav Khanna ko how I know is like, I remember growing up, he was a very good model and he used to be very cute and handsome. So that's how I know Gaurav. Otherwise I don't know him personally. But obviously, you know, people who does serials are loved by many. So जो serials करता है उनको ये एक चीज़ का leverage होता है कि even small town में बैठी आंटी का बेटा सब आपको प्यार करते हैं. बहू भी प्यार करती है, बहू की सास भी प्यार करती है. So that is a good positive point. आपको वोट्स मिलेंगे उस हिसाब से. सो आई एम श्योर ही हैज दैट, वो दैट थिंग इज हिज पॉजिटिव पॉइंट, नो. जैसा शायद आपने देखा होगा कि फरहाना और गौरव की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी एंड फरहाना बार बार गौरव को पोक कर रही थी कि लाइक तू टीवी का स्टार है, तुझे कौन जानता है? व्हाट डू यू थिंक? लाइक ऐसा कहना किसी को, टीवी के स्टार्स को ही लोग जानते हैं. अगर उसने ऐसे बोला तो दैट इज a very dumb thing to say, because कौन नहीं जानता. आई थिंक देखो, अगर हम लोग टीवी नहीं भी देखते होंगे तो फिर भी कौन सबसे ज़्यादा टीवी कौन देखता है, यू नो, स्मॉल टाउन में. ठीक है, हम वी हैव अ फास्ट लाइफ इन बॉम्बे, मे बी वी आर रनिंग अराउंड एंड हसलिंग, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है. बट अगर कोई भी एक जो पीसफुल फैमिली लाइफ जीता है, जो मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग, यू नो, 9 to 5 जॉब करते हैं, वापस आते हैं, शाम को टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं. सो वो लोग टीवी में यही देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं. एंड आई रिमेंबर लाइक माई फैमिली यूज्ड टू वॉच टीवी सीरियल्स, एंड इवन नाउ आई थिंक सारे, आई थिंक एवरीवेयर दैट आई हैव सीन, सब लोग टीवी देखते हैं. तो टीवी के स्टार्स को लोग जानते हैं. इफ यू सी, अभी तक जो जीते भी है ज्यादातर लोग टीवी के सीरियल वाले ही जीते हैं ना. जो सो दिस इज वेरी डम थिंग टू से. ओके. सो जब भी
वीकेंड का वार हुआ था, रोहित शेट्टी आए थे एंड रोहित शेट्टी ने फरहाना को कहा कि मैं एक छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ, टीवी पर आता हूँ, लाइक इनडायरेक्टली उन्होंने कहा फरहाना को, तो फरहाना वाज लाइक कि लाइक उनका मुंह बन गया था ऐसा। सो बाद में रोहित शेट्टी ने फरहाना को ऑफर दिया खतरों के खिलाड़ी करने के लिए एंड शी वाज लाइक यस आई विल डू। सो आप क्या बोलोगे इस पे? ओके, तो मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा। अभी जो आप इतने इतने मुझे जूसी बातें बता रहे हो, आई रियली वांट टू गो एंड वॉच इट। हाँ, Yeah, but that means that maybe that was a strategy that she was trying to show off that मुझे कुछ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं है। But eventually सबको सब पता है यार, आप इस इंडस्ट्री में रहते हो, आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको दिख जाता है। So I think acting like lot of people do that in real life also, that I don't know you, but somewhere I think कहीं ना कहीं तो हम सबको देखते हैं, we know everyone, everyone knows everyone. So that is a very pretentious thing to say, but अगर आपने उसी वक्त ऑफर ले लिया, that means you have seen. No? It's like you don't know Rohit Shetty. Did she say that? ना ना ना, He was just making fun of it. Okay. जिसल आपको बिग बॉस में जितना भी आप फॉलो कर रहे हो, किसका गेम पसंद आ रहा है? विनर कौन होगा? विनर किसको देखती है या कौन होना चाहिए? See, कौन मैंने deserve अभी देखो, मैं ऐसे बोलूंगी जबकि मैंने नहीं देखा तो गलत होगा, बट लाइक आई सेड मे बी गौरव खन्ना हैज leverage to win because he's from a serial background, and I would also like Kunika ji to win because she's very strong woman, and she has, if she's supporting women empowerment, and she has been I think she's a very strong person, so I would like her to win because I know her, ओके of her, know of her, yeah. ओके। जिसल आपने काफ़ी सारे रियलिटी शोज किए हैं, सो नेक्स्ट आप किस रियलिटी शो में मतलब जाना पसंद करेंगी? खतरों के खिलाड़ी या फिर अदर? और मतलब क्या हमें नया देखने मिलेगा जिजेल की तरफ से? So because मैंने yeah, I would like to do खतरों के खिलाड़ी, I would like to do traitors, and I'm open to doing any like I was offered गाँव की गोरी, that reality show. So maybe that next season I'm open to doing any reality show because now that I'm back, I would love to do anything. Yeah. Yeah, thank you जिजेल, thank you so much.